Okay, everyone. So there was a technical glitch due to which the session got disturbed. Okay. So if all of you were there, kindly join the session again. Okay. And let me know. Okay, okay. Now visible and audible. Thank you very much. Okay, so I was talking about this gallium nitride nanoparticle, and as you know, very good evening, Ashu, Manglish. Okay, now let me continue. So I was talking about gallium nitride nanostructures, and I told you that this gallium nitride nanostructure is using the phenomenon that is called surface polariton excitations, due to which it is able to emit infrared radiations and also it is able to absorb the same thing. Okay, as I told you that it is highly efficient infrared absorber, emitter and modulator. So it can be useful in defense technologies, also in energy technologies, imaging and sensing. Various kinds of technology it can be used. Here you have to know what is this polaritonic technologies. Polaritonic technologies have attracted a wide range of applications such as secure high speed light based communication, that is called Li-Fi. As you have heard about Wi-Fi, a new technology came into news, that is light based communication, Li-Fi technology, and next generation light sources, solar energy converters, quantum computers and waste heat converters. So polaritonic technology is basically used in these kinds of technologies. Solar energy converters are using this polaritonic technology very much, and also it is used in Li-Fi technology, right? So now we have to know what is gallium nitride. One can ask you, or in the examination it could be asked to you, that what is gallium nitride, and then it would first of all you have to know its nature, and then you have to know that when it is converted into for blue light emission, and its advantages are so much. Its advantages are that it is very reliable. Since it is a semiconductor, it is compact in size, it is highly efficient, fast switching speed, low on resistance and high thermal conductivity. One should know that this high thermal conductivity is a very important feature of this gallium nitride semiconductor. Why? Because since it is semiconductor, so since it is semiconductor, so it would be very beneficial in the conversion of solar energy, but it has high thermal conductivity, so it can absorb huge amount of temperature, it can absorb huge amount of heat from the sun, and that is why it becomes more important, right? This technology is of strategic importance with its application to 5G, space and defense applications, because since it has, you can say, fast switching speed, it has fast switching speed, that is why it could be used in 5G technologies, and it could also be used in, you can say, certain space applications and defense applications, where there is need to fast switching speed, right? So with these characteristics, this gallium nitride is very important, and that is why when its nanostructures are formed, so one of the major characteristics evolved with them,
and that becomes the infrared absorptions and emissions, right? Infrared absorption and emission. Here you have seen that what are the major characteristics of gallium nitride when it is found in its common form, and when it is converted into nanostructures, one of the characteristics evolved with them, that is the emission and absorption of infrared, right? This is very important feature related to gallium nitride. Now, here before you, one of the major news, one of the very important news, which is not very much, you can say, unknown for you. It is somewhat familiar to you, and it is known as dark patterns. Since we are familiar to the use of internet, and we have seen sometimes that certain kinds of, you can say, links are sent by different kinds of different companies and different you can say platforms, in which various kinds of you can say matters have been given there, and once you have to write down those matters and then click on the agree tab. So further the software moves and you will get the access of the other things, right? So here, first of all, you have to know what are dark patterns and why it is in news. It is in news. Some internet based firms have been tricking users into agreeing to certain conditions or clicking a few links. आपको पता होगा कि बहुत सारी जो इंटरनेट बेस्ड फर्म्स हैं, ये क्या करती हैं, ये टाइम टाइम पर कुछ पॉपअप्स आते हैं. जब हम इंटरनेट पर काम करते हैं तो टाइम टाइम पर कुछ पॉपअप्स आते हैं, और उन पॉपअप्स के थ्रू नई नई चीजें जो है वो वहां पर शो की जाती हैं, और ये जो कंपनीज है वो एट अ टाइम आपसे उनकी जो सर्टेन कंडीशंस हैं उस पर एग्री करने के लिए लिंक्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, और ये लिंक्स वहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद फर्दर वो एक्सेस आपको प्रोवाइड कराते हैं. सो नाउ इन दिस सेशन वी विल हैव टू सी व्हाट आर दीज डार्क पैटर्न्स. इन पर थोड़ा सा बात करें. These patterns are unethical user interface designs that deliberately make users' internet experience harder or even exploit them. In turn, they benefit the company or platform employing the designs. By using dark patterns, digital platforms take away a user's right to full information about the services that are using and their control over their browsing experience. So, as I told you that the dark patterns are basically interface designs. जब भी आप कोई इंटरनेट ब्राउजर इंटरनेट पर कोई ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, कोई ब्राउजर जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर उसके इंटरफेस पर जो है एक सर्टेन डिजाइन आता है, और वो सर्टेन डिजाइन आपसे सर्टेन एग्रीमेंट जो है वो रिक्वायर करता है, वो एग्री वाले बटन पर जो है वो आपको क्लिक करना होता है. तो ऐसे समय में आप जैसे ही वो क्लिक करते हैं, उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो हैं, वो इंफॉर्मेशंस एक्चुअली आपके एग्रीमेंट से जो है उनको बहुत सारी चीजों, उनका एक्सेस कितना होता है, आप क्या ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये सारी जानकारी, ये सारी चीजें जो है वो उन तक पहुंच जाती हैं. ओके, इस तरीके से ये जो इंटरनेट कंपनीज है, ये क्या करती हैं, ये अपनी कंपनी को बेनिफिट करती हैं, और साथ के साथ जो डिफरेंट डिजाइन्स है ना, प्लेटफॉर्म ये जो है, ये डिफरेंट डिजाइन्स के थ्रू क्लिक करा के उस कंपनी को जो है वो बेनिफिट करने का काम करती है. हाँ, जो कुकीज आप कहते हैं ना, कुकीज एक्सेप्टेंस, और उसमें ये बताते हैं कि जो है वो अलग अलग तरीके के जो साइट्स हैं वो कुकीज जो है उस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, और इसलिए आपको जो है वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो फिर वो चीजों को फर्दर, बहुत सारी चीजें जो एक्सेस आप कर सकते हैं वो एक्सेस करने नहीं देते. ठीक है,
By using dark patterns, digital platforms take away a user's right to full information about the services. Services के बारे में full information लेते हैं. They are using and their control over their browsing experiences. Okay. The term is credited to UI or UX, that means user interface or user experience researcher and designer Harry Brignall, who has been working to catalog such patterns, and the company is using them since around 2010. है ना, ये 2010 से ही ये सिस्टम चला आ रहा है और इसके डिजाइनर हैरी ब्रिगनल जो है, इन्होंने यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस है ना के जरिए रिसर्च करके और इन सारे पैटर्न्स को डिजाइन किया और इससे जो है ये कोई भी ब्राउजर, कोई भी पर्सन जो कि ब्राउजिंग कर रहा है इंटरनेट पर, तो उसके जो एक्सपीरियंसेस है और ब्राउजिंग में वो क्या क्या चीजें ब्राउज कर रहा है उसका पूरा डेटा वो कलेक्ट करके कंपनी को बेनिफिट करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो जो है जो फैसिलिटीज है उस पर वो प्रोवाइड कर सके. राइट. सो ये डार्क पैटर्न्स के बारे में. यूज क्या है इनका? Social media companies and big tech firms such as Apple, Amazon, Skype, Facebook, LinkedIn, Microsoft and Google use dark and deceptive patterns to downgrade the user experience to their advantage. In social media, LinkedIn users often receive unsolicited sponsored messages from influencers. So अलग-अलग तरीके की जो टेक कंपनीज है, ये टेक कंपनीज इस तरीके के डार्क पैटर्न्स को यूज करती हैं. डार्क पैटर्न्स में क्या करते हैं कि वो यूजर का जो एक्सपीरियंस है ना, यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको डाउनग्रेड करती हैं ताकि उससे उन्हें कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल पाए. राइट. उससे उन्हें एडवांटेज मिल पाए, इसके लिए वो यूजर के एक्सपीरियंस को डाउनग्रेड करने का काम करती हैं इस तरीके के पैटर्न्स का इस्तेमाल करके. राइट. The term is credited to, right, I told you already है ना about this. Now what are the concerns? The dark pattern endanger the experience of internet user and make them more vulnerable to financial and data exploitation by big tech firm. As I told you कि ये बहुत सारे जो टेक कंपनीज हैं वो टेक कंपनीज इस तरीके के पैटर्न्स को यूज करते हैं ताकि जो पब्लिक का एक्सपीरियंस है उसको लेकर बहुत अच्छा ना हो और उससे उनको जो है वो पर्टिकुलरली फायदा हो. डिसेबलिंग दिस ऑप्शन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस with multiple steps that require users to be familiar with the platform controls. So common people जिसको बहुत ज्यादा इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी इस तरह की ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो उन ब्राउजिंग के दौरान बहुत सारे लोग तो अननोइंगली, उन्हें पता भी नहीं होता और वो क्या करते हैं इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते चलते हैं या सोचते हैं कि इसको पढ़ने में क्या टाइम लगाना है, फटाफट एक्सेप्ट किया और आगे जो है वो ब्राउज कर लिया, आगे जो है वो चीजों का एक्सेस कर लिया. तो इन कंडीशंस में अननोइंगली वो बहुत सारी चीजों को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट करा देते हैं कंपनी के लिए. ठीक है. डार्क पैटर्न्स कंफ्यूज यूजर्स, इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन ऑब्स्टेकल्स, मेक सिंपल टास्क टाइम कंज्यूमिंग एंड हैव यूजर्स साइन अप फॉर अनवांटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. इसके थ्रू यूजर्स जो है बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो कि यूजर्स के काम की नहीं है या यूजर्स उसे लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद चूंकि यूजर को ये पता नहीं है कि ये जो सिस्टम उनके सामने आया है उसको डिसेबल कैसे करे, यूजर को जो है वो उसे मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता है और मजबूरन जब यूजर इस चीज से एग्री करता है तो उसको लेकर उसे खासी परेशानी होती है और इससे फिर आगे जो है कई सारी और भी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है. राइट. सो ये डार्क पैटर्न्स जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो कि अभी न्यूज में रिसेंटली रही है. राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मेजर ट्रांसजेनिक क्रॉप हियर, दैट इज जीएम मस्टर्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप जो कि अभी हाल फिलहाल न्यूज में रहा.
GM मस्टर्ड के बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अभी प्रोतुष ने शायद पीछे पूछा था कि क्या हमें बेसिक्स भी जानने चाहिए। ऑब्वियसली बेसिक्स जानने चाहिए। अभी यहां से आप देखो GM मस्टर्ड की बारी आई है, एंड इफ यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पर आपको ये चीज पता चलेगी कि GM मस्टर्ड भी उन्हीं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का ही एक पार्ट है। सो वन कैन आस्क यू, और इन द एग्जामिनेशन इट कुड बी आस्क्ड टू यू कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के क्या फीचर्स है, वगैरह वगैरह चीजें, राइट। So first of all, why it is in news, we have to see here. Recently, the genetically modified mustard, that is GM mustard, Dhara mustard hybrid, DMH11, right? इसका जो full name है, that is Dhara mustard hybrid, okay? Dhara mustard hybrid, and its common name is what? It is DMH11, right? DMH11 इसका नाम है, was tested in the field and shown to be more productive. GM crop ये जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटी की सीड के फॉर्म में जो है इसको टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन ऑफ DMH11 वेराइटी इज नॉट इंटरफेयरिंग विद हनी बीज नेचुरल पॉलिनेशन प्रैक्टिसेस। यानी ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाया गया, इस ट्रांसजेनिक क्रॉप के थ्रू सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज टेस्ट की गई वो ये कि इसने हनी बी का जो नेचुरल पॉलिनेशन, हनी बी के थ्रू जो नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा था, उस नेचुरल पॉलिनेशन को किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं किया। यानी हनी बी के नेचुरल पॉलिनेशन के साथ इस मस्टर्ड वेराइटी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। ये इसके साथ एक पॉजिटिव चीज रही और ये हमारे लिए भी एक पॉजिटिव चीज रही। यहां पर कुछ चीजें हम यहां पर जरूर जाने। सबसे पहले व्हाट इज दिस GM मस्टर्ड? इट इज एन indigenously developed transgenic mustard. When we use the term transgenic means what? We have changed the certain genes in the mustard crop, and the genes, some of the exported genes are basically taken and then those genes are inserted in the DNA. Those genes are inserted in the already growing variety, and so that we have made a new kind of crop, a new kind of hybrid crop which shows certain different characteristics by insertion of that particular gene. आपने उसके जीन में कुछ चेंजेस किए और जीन में चेंजेस करने से कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिखाई दिए तो इनको आप जो है वो यहां पर शो करेंगे। ऐसे प्लांट्स को आप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बोलेंगे। इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड, है ना। तो यहां पर जो चेंजेस हुए हैं इसमें आपको याद रखना है कि व्हाट चेंजेस डन विद दिस क्रॉप। सो दिस क्रॉप इज बेसिकली हर्बिसाइड टॉलरेंट। ये क्या है? ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, यानी जो खरपतवार नाशक आप डालते हैं प्लांट्स पर, है ना, उन खरपतवार नाशकों का जो इफेक्ट है वो इस मस्टर्ड की क्रॉप पर नहीं पड़ेगा। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है और DMH11 इज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन इंडियन मस्टर्ड वेराइटी वरुणा एंड ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2 मस्टर्ड्स। यानी कि दो मस्टर्ड वेराइटी हैं, उन मस्टर्ड वेराइटीज को यहां पर क्रॉस कराया गया और उस क्रॉस से इस ट्रांसजेनिक क्रॉप को जो है वो प्रोड्यूस किया गया। When we talk about the crosses, so in the cross of, that means in the hybridization of these two crops, these two varieties, the changes in gene occurs and that change in gene make the mustard crop as herbicide tolerant, right? इसको herbicide tolerant बना दिया। कौन कौन सी दो वेराइटीज है? ये वेराइटीज आपको याद रखनी है। You have to remember that it is
Indian variety, Indian mustard variety, that is Varuna, and the East European mustard variety, that is अर्ली हीरा टू मस्टर्ड, है ना। इन दो वेराइटीज को क्रॉस कराने के बाद ये नया जीएम मस्टर्ड जो है वो प्रोड्यूस किया गया। व्हाट आई एम रिपीटिंग हियर दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस ट्रांसजेनिक क्रॉप इज herbicide tolerant. This is herbicide tolerant. I am repeating it. Okay, now what happens there? So from the crop it contains two alien genes, Barnase and Barstars, isolated from the soil bacterium called Bacillus liquefacient that enable breeding of high yielding commercial mustard hybrid, right? Very important thing is what? That is, there are two alien genes. Two alien genes means what? The genes which are imported from, which is taken from the organism that is not of plant species, right? प्लांट के स्पीशीज से नहीं लिया आपने, बैक्टीरिया के दो जीन्स इंपोर्ट किए और उन जीन्स को यहां पर यूज किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? दैट बैक्टीरियाज नेम इज बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियन, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियन। और इस दो जीन की मदद से जो वैरायटी है, यानी जो मस्टर्ड की वैरायटी है, वो हाई यील्डिंग कमर्शियल मस्टर्ड हाइब्रिड के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगी। Barnase in Varuna induces a temporary sterility because of which it can't naturally self-pollinate. Barstar in Hira blocks the effect of Barnase, allowing seed to be produced. Right? So ये जो दो अलग अलग तरीके के जीन्स थे, एक बार्नेस जीन्स था जिसने वरुणा में टेम्पररी स्टर्लिटी जो है वो इंट्रोड्यूस की। इस स्टर्लिटी की वजह से क्या हुआ? इस स्टर्लिटी की वजह से जो वरुणा है वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सकते थे, है ना। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सकते थे, इनके पॉलिनेशन के लिए फिर किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत थी। आप बहुत इतना डीप में नहीं जाएं, आप सिर्फ इस चीज को याद रखें, कौन सी वेराइटी थी, एलियन जीन्स कौन से थे। इस तरह के क्वेश्चन डाल सकते हैं बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट। तो ओवरऑल अगर देखें, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द बैक्टीरियम फ्रॉम विच द एलियन जीन्स आर टेकन, राइट, एंड यू हैव टू रिमेंबर द टू वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड्स बिटवीन विच द क्रॉस वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट। तो दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगी यहां पर। ओके, DMH 11 has shown approximately 28% more yield than the national check and 37% more than the zonal checks, and its use has been claimed and approved by the GEAC. Okay, so यहां पर आपको बताऊं मैं कि ये जो दो तरीके के अलग अलग चेक्स बताए जा रहे हैं, नेशनल चेक एंड जोनल चेक, these checks are basically suggesting us the number with which the production increased, production get increased। कहां से प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ? तो जो प्रोडक्शन इंक्रीज यहां पर दिखाया गया या यील्ड में जो इंक्रीज दिखाया गया है वो 1/4, मोर देन 1/4 इंक्रीज एट नेशनल लेवल। अगर आप ओवरऑल जो नेशनल प्रोडक्शन है उसमें अगर आप देखेंगे तो 28% का जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। अगर पर्टिकुलर जोन्स के बारे में बात करेंगे तो यहां पर 37% का जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। तो इस तरीके से जो है वो दो अलग अलग तरीके से हमने प्रूव किया कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो है वो नजर आ रही है। बार जीन मेंटेन्स द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ hybrid seed. Okay, so these are the important news I have found in the last week's session, and from that session we have introduced the things. From that session I have taken these news, and I hope that these news will benefit you. You have to remember the things I have discussed here.
not very deeply, but you have to know all the things which have been given here in the PDF, and the things which are also related to what? The basics of these news, right? As I have told you that in this news, that means for GM mustard crop, for GM mustard, you have to remember here that this is basically related to transgenic crops. So how a transgenic crop is produced, what are the benefit to produce a transgenic crop, you have to remember all these things. Okay, and in the next class we will discuss the other things, since Wednesday will be in the new year now. So in advance to all of you, I wish you a very happy new year. आपका नया वर्ष जो है वो शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, और मिलते हैं अगली क्लास में, और उसके बाद फिर जो है हम आगे चर्चा करेंगे इन चीजों पर. थैंक यू वेरी मच.